हे एवरीवन, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्रेयसी भट्टाचार्य जी, ऑल इंडिया रैंक 51 होल्डर इन द डिसम्बर एग्जामिनेशन। दिसंबर का जो CSI नेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें श्रेयसी को ऑल इंडिया रैंक 51 मिली है। सो सबसे पहली बात तो मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयसी, एंड वी वेलकम यू ऑन अवर प्लेटफॉर्म। Thank you, ma'am. Thank you for providing me the opportunity. ओके, सो श्रेयसी, हम मतलब द पॉइंट इज़ कि आज का जो इंटरव्यू है इसका पर्पज़ ये है कि जो चीज़ें आप एज अ स्टूडेंट आपने फेस की होंगी, चाहे वो कुछ हार्डशिप्स हों, चाहे वो कुछ एक ऐसी कुछ टिप्स हों, कुछ ऐसे एडवाइजेज़ हों जो आपको लगता होगा कि ये चीज़ें मैंने फेस की है बट मैं फ्यूचर एक्सपीरियंस तक ज़रूर ये पहुंचाना चाहती हूँ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सारे पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम लोग कवर करें आपके साथ में और बच्चों तक वो मैसेज सारे पहुँच जाए। सो सबसे पहला जो मेरा जब मैं स्टार्ट करूँगी बात की कॉन्वर्जेशन की वो ये है कि आई एम श्योर कि जब आपका रिज़ल्ट आया होगा तो घर पे एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट का माहौल होगा। तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। So when the percentile was out, so my parents were very happy, and I almost started crying because I expected above 99 तो होना है, but then इतना भी ज़्यादा I did not expect. So and then my parents were also very happy, and I think it was very late at night. It was around 1:30 a.m. at that time. I could not sleep once I got to know that the result has been declared. So and I could not log in also when net थोड़ा issue कर रहा था. So after that, when I saw, I was really happy. I could not sleep that entire night, and my parents also got very happy. But then now, I did not expect that I will get 51 rank, like within 100. So that is a very happy thing, and my parents saw me work so hard for the last few months, so they are satisfied. आई एम 100% श्योर कि ऐसा हुआ होगा बिकॉज इतनी मेहनत के बाद बच्चे से एक्सपेक्टेशंस होती है, आपको खुद से भी होगी, बट उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर जब रिजल्ट आता है ना, सो दैट गिव्स एन इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर श्योर। ओके, देन श्रेयसी, हम जानना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका परसेंटाइल एग्जैक्टली कितना था बच्चे? मेरा परसेंटाइल 99.86 था। 99.86। ओके, सो एंड आपका कौन से शिफ्ट में पेपर था? मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट। एंड जैसे बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत डिफरेंट है। इवनिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो डू यू ऑल्सो फील द सेम? इट्स नॉट एवरी टाइम कि इवनिंग ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा वेरी तो करता है हर वक्त। Like every time there is little variation. Some of my friends this time also went for the evening shift, and they said that the part B was far more challenging. बहुत informative questions जो बिल्कुल direct है वो पूछे गए थे. So I think there was this question about the third amino acid of oxytocin hormone or something. So these things are very informative. If you don't know that, it's very difficult to do. So this time I think it was a bit difficult, the evening shift. But then वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइजेशन तो वैसे करते ही है ये लोग। ट्रू, 100% ट्रू। मतलब तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे ही बच्चों का एडमिट कार्ड आता है उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की हो जाती है कि हमारा इस शिफ्ट में पेपर आया तो अब हमारा क्या होगा एग्जैक्टली। बट ठीक है, मतलब आई थिंक हम आपसे बात करें एंड वी विल टॉक टू, मतलब वी आई हैव स्पोकन टू अदर टॉपर्स एज वेल, अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है। एंड एक ही बच्चा दोनों पेपर देगा तो शायद वो ज़्यादा उससे बता सकता है, और सबका प्रेपरेशन लेवल आई फील बहुत डिफरेंट होता है, तो किसके लिए क्या वर्क करिए किस शिफ्ट क्या में होगा एग्जैक्टली वो बहुत उससे मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है। ओके, देन श्रेयसी, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओ। Okay, so I am a Bachelor of Science from St. Xavier's College in Microbiology, and I did my MSc in National Brain Research Center, MSc in Neuroscience. ओके, ग्रेट, बहुत ही शानदार। सो आई एम श्योर कि जब इतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बैकग्राउंड है तो तुम फ्यूचर भी आई थिंक इसी फील्ड में प्लान कर रहे होगे। हाँ, मैं न्यूरोसाइंस में ही प्लान कर रही हूँ PhD करने का। तो कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह है जहाँ से तुम करना चाहते हो, इंडिया या अब्रॉड? इंडिया से ही करना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई फोकस्ड सो मच फॉर CSIR एंड गेट। So इंडिया से mainly I want IITs, IISERs या फिर IISc, and there is also NIMHANS.
So in जगह there are some of, not all, in all of the IITs neuroscience is not there, but in some there is a very good opportunity. So वो try करना चाहती हूँ. Let's see interview कहाँ से क्या होता है. तो अभी जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कोई फॉर्म भरना शुरू किया तुमने? नहीं, अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी थोड़ी कुछ देर के लिए. So I returned today. So today and from today I'll start, क्योंकि वो SOP वगैरह वो भी रेडी करना होता है. So for that I need to start early. Okay, ठीक है. I think IISc का फॉर्म निकला हुआ है. हाँ, IISc का निम्हांस का निकल गया है. हाँ, तो उनका तुम वही फिल कर सकते हो. तो इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग तुम्हें लगता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चों का अपडेटेड स्कोर कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है कि अपडेटेड स्कोर. हाँ, अभी मैं भी वेट कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू मेक अ CV, और थोड़ा आई थिंक इन निम्हांस ओनली दे हैव मेंशन्ड कि इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू CSIR देन यू शुड प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. तो अभी अपडेटेड स्कोर कार्ड मिल गया तो फिर मैं वो भेज सकती थी, बट देन नाउ आई कैन नॉट अपलोड एनीथिंग. स्कोर कार्ड तो है बट द रैंक इज नॉट देयर, और क्वालिफाइड की नहीं है वो तो नहीं लिखा है. So I'm waiting for that also. I keep asking people who have qualified कि कब निकलेगा. Last time it was very fast, I think. Yes, one of my friends said. Last time I guess 2 to 3 days के अंदर updated score card आ गया था, if I'm not, एक वही maximum. But इस टाइम आई थिंक शायद उन्होंने मतलब जो मे बी जो रिजल्ट के अंदर उन्होंने रैंक्स वहाँ पर लिख कर दे दी हैं, शायद उसके कारण वो आई एग्जैक्टली डू नॉट नो द रीज़न, बट लेट्स जस्ट होप कि जल्दी आ जाए, बिकॉज अब आप जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट करें अप्लाई करने का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में. ओके श्रेयसी, सो ग्रेट इनसाइट्स. अब मुझे ये जानना है बेटा कि एक बच्चों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है, बहुत फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन होता है कि हम कितना पढ़ लें 13 यूनिट से सिलेबस में, कितना पढ़ लें कि CSIR निकल जाए हमारा, JRF क्रैक हो जाए हमारा. So personally I think if somebody is well prepared for 9-10 units they can crack, but then it is very difficult for people to be well prepared with everything in 9 units. So like what I did was I prepared 11 units. उसमें से for 8 units I was very very confident about. 8-9 units I was very like I went into like all the details and everything, tried to. Still there are some portions which gets always left. So and for the rest 2 units I was like moderately prepared, but like at least I can solve the easier questions, at least the part B questions wo ho jaye. So that is, but what I would suggest the people who are sitting for exams, right, is like some people only go for the units they are comfortable about, like they have read for their BScs and MScs, so वो 7-8 करके चले गए. But I think like there are some core units which you should always focus on, and like I was very scared of developmental and plant physiology क्योंकि मैंने ये कभी किया नहीं, माइक्रोबायोलॉजी भी नहीं, न्यूरोसाइंस भी नहीं. So I had to go out of my comfort zone to study all those. So that is very important. तो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रायोरिटी यूनिट्स थी जिनको तुम्हें ऐसा था कि नहीं ये सबसे पहले मुझे कवर करनी है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स? Yeah, so I was familiar with biochemistry, molecular biology, cell signaling, immunology, genetics. ये सब मुझे पहले मैंने पढ़ा था. I just needed to revise everything, or I had to retain everything. ये BSc में I had experience, but then developmental biology, that is what I started with because I was scared of it the most. So एक बार वो हो जाए, then a big barrier would have like वो खत्म हो जाए. So that's what I started with. I started with developmental biology, but like many people are not comfortable with starting new topics like right away. So like some people can go slow with this, like revising topics and then start with new topics. But for me, I did developmental biology, evolution, and plant physiology in the beginning because these are topics which I never learned. ओके मतलब मैं एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दिस कि अनलाइक अदर स्टूडेंट्स जो कि स्टार्ट करते हैं ऐसे यूनिट से जो उन्होंने पढ़ा है बैचलर्स में, मास्टर्स में, तुमने वो टॉपिक चूज़ किया जो तुमने मतलब जो तुम्हारे लिए एकदम नया है, जिससे तुम्हें डर है. तुमने बोला सबसे पहले डर को ख़त्म करते हैं, फिर आगे का तो अपना स्ट्रेंथ एरिया है ही, वो तो हो ही जाएगा. ग्रेट अप्रोच. सो
देन देन there's one more thing कि जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शंस अगर मैं बात करती हूँ तो पार्ट ए के लिए डिड यू स्टडी स्पेसिफिकली, कुछ तुमने पढ़ाई की थी, कोई सोर्सेज कुछ फॉलो किए थे? हाँ, पार्ट ए के लिए मोस्टली व्हाट आई डिड वाज पीवाईक्यूज and PYQs में भी they have different kinds of general aptitude. What I for logical reasoning that I did not practice much, but the maths portion मुझे एक प्रॉब्लम होता था, वो वर्क एंड टाइम का जो सम्स होते हैं वो बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने, बिकॉज आई कुड नेवर डू इट एग्जाम हॉल में. घर में तो कर देती थी, बट देन एग्जाम हॉल में एवरी टाइम आई यूज्ड टू लाइक फेल. So those sums I practiced like every day, not like too much. Every night around like half an hour general aptitude करती थी. ओके ग्रेट. मतलब तो तुमने थ्रू आउट अपना 6 months फॉलो किया है? और हाँ ये I threw out and वो like एक stress buster का kind of भी होता था. So I'm solving questions, थोड़ा general aptitude देख लेते हैं, like जो हो रहा है like small questions, तो वो बन जाता था. ऑलराइट ग्रेट. तो मतलब सिमिलरली एंड यस फॉर पार्ट बी एज वेल कुछ स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो किया था कि पार्ट बी क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ हम ऐसा करते हैं? हाँ, सो पार्ट सी के लिए मैंने ज्यादा फोकस किया था. दैट आई यूज्ड टू लाइक एवरी चैप्टर व्हेन आई फिनिश आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सी, उसी चैप्टर यूनिकली. एंड देन पार्ट बी तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आई यूज्ड टू डू. बट देन दिस टाइम पार्ट बी आई थिंक आउट ऑफ ऑल द सेक्शंस पार्ट बी में मैं थोड़ा like I attempted only 23 questions there. So I felt like maybe I could have done better. क्योंकि like 35 questions तो कर ही सकती थी, but then there was so much information in some of them, so I found it a bit difficult. But हाँ, part B I studied with along with part C only. Whenever I did part C questions, कभी-कभी part B का भी कुछ questions रहता था in PYQs and everything. So that I did. ओके. एंड कितने ईयर के PYQ सॉल्व किए थे आपने? 10 year. 10 ईयर पक्का से एकदम 10 साल के तो करे हैं. और उनके नोट्स वगैरह भी बनाए थे या फिर यू जस्ट नीड टू लाइक यू जस्ट सी द क्वेश्चन और उसके आंसर देखा डन ऐसा? So what I did was when I started solving the questions, तो कभी-कभी कुछ questions solve नहीं होते थे, and then sometimes explanation तो रहता था, and sometimes I used to search that topic up in a YouTube video. तो कभी-कभी कुछ YouTube videos है like yours कि you solve the PYQs like your short, वो उसमें होता है. And then I think there were some videos around in which you were solving each question पिछले year से, and then you explain the entire answer with a lot of information around. तो वो भी मैं देखती थी बहुत. ओके ग्रेट. तो श्रेयसी इज देयर एनीथिंग तुम्हें लगता है कि बच्चे जो नहीं निकाल पाते बार बार लाइक अटेम्प्ट्स देते हैं एंड दे आर वेरी स्केयर्ड, दे ऑलवेज टेल मी कि मैम हम बहुत मेहनत से पढ़ाई की है मैंने तो लेकिन मेरा नहीं निकल रहा एग्जाम. सो डू यू थिंक कि कोई भी स्पेसिफिक ऐसा रीज़न है या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पा रहे, जो नहीं उनको लाइक पता चल पा रहा है, जिसके कारण वो बार बार उनके फेल अटेम्प्ट्स वो दे रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर? हाँ, so personally it was my third attempt, but like it was like my first attempt with preparation. Last 2 times मैंने like I sat for the exam with not with full preparation, and this is what I would suggest to anybody कि don't go to sit for an exam half-heartedly. If you are going there half-heartedly, then don't expect anything from that examination. So like if you have to prepare very very seriously for this exam because इतना कुछ retain करना होता है, and also not to get too disheartened or this because it takes a lot of attempts for some like very good students also I have heard. क्योंकि डिपेंड भी करता है कौन सा सब्जेक्ट बैचलर बीएससी में था एमएससी में था. इट डिपेंड्स क्योंकि कभी कभी लोग का लाइक दे डू नॉट स्टडी दीज थिंग्स एंड हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स डिफरेंट तरीके से. एंड ऑल्सो आई थिंक that there is a particular approach to the exam. Only like just studying everything is not something I would suggest. At least those portions which are important for the examination. क्योंकि ये 6 month के बाद होता है, right? So in 6 months you cannot cover every of the books which are standard books which are suggested for the CSR exam. So the portions which are important as well as the portions from which the most questions come, as well as what strategy you are undertaking during the exam and utilizing your 3 hours,
वो भी मैटर करता है। डेफिनेटली तो तुमने स्टैंडर्ड बुक्स की बात की है एंड आई एम श्योर मैक्सिमम पीपल मतलब वो इसी डायलेमा में फंसे रहते हैं थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है कि क्या करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपर्स सजेस्ट कि दे हैव रेड द स्टैंडर्ड बुक्स, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का मतलब कवर टू कवर पढ़ना नहीं है. इट्स मोस्टली अबाउट द टॉपिक स्पेसिफिक थिंग्स विच दे नीड टू रीड. तो वही मुझे आप भी बताओ ये चीज़, एंड आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू एवरी एस्पिरेंट कि एग्जैक्टली टॉपर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, क्या वो स्टैंडर्ड बुक सारी की सारी मोटी मोटी पढ़ रहे होते हैं अलॉन्ग विद देयर नोट्स और मेकिंग नोट्स और व्हाट. येस, प्लस सेकंड क्वेश्चन इज कि नोट मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हैव यू डन दैट? एंड येस, सो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, पर लाइक सम ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद, बिकॉज वो बीएससी में मैंने पढ़ा था, लाइक लेनिंजर, क्यूबी, ये सब मैंने तो पढ़ा हुआ था, इन मॉल बाय ऑल्सो, ब्रूस एल्बर्ट्स एंड एवरीथिंग, आई हैड डन दिस इन माय बीएससी, तो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी था, बट दिस टाइम आई जस्ट वेंट थ्रू सम पार्ट्स ऑफ देम, स्पेशली क्यूबी, क्योंकि इम्यूनोलॉजी मैं थोड़ा भूल गई थी. And what I learned, what I by hearted was Gilbert, because I was very scared of deaf bio. So, and deaf bio is something वो ना मुझे like I had to like read one paragraph like 5 times to understand what they are trying to say. So that I tried to do. And for the rest of the units, I relied on lectures from the coaching institute I was enrolled in, and from also the YouTube channels and also the PYQs. So even the books I studied, then also if I had any confusion on anything, I always refer to the videos, any lectures, and then I made notes. Even if I'm reading a book or a video, I made notes and flowcharts and everything. Also PYQs, also I started making notes, understanding the question and then solving the question. So notes is very important. Like मेरा तो like इतना like diaries इतना मोटा मोटा वो तो 5-7 पूरे खत्म हो गए, and pens भी खत्म होता रहता था, because like at the last moment I was like इतना तो मैंने notes बना लिया, इतना क्या पढ़ भी सकते, मैं revision का time नहीं मिलेगा, but at least when I am writing वो थोड़ा like I am learning better. अंडरस्टैंड, मतलब कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. और मुझे लगता है कि ये चीज़ जितना ज़्यादा जल्दी बच्चे समझ जाए उतना अच्छा है कि नोट मेकिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप बोल रहे हो ना कि प्रॉब्लम हो रही है याद करने में या चीज़ें याद नहीं रह रही, वो अपने आप होना शुरू हो जाएंगी व्हेन वंस यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स. तो Exactly. Alright. So again, coming back to sources part. So was there any specific source that you followed? आपने कोई स्पेसिफिक सोर्स फॉलो किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, या फिर यू वर डूइंग योर सेल्फ स्टडी एंड डूइंग द प्रिपरेशन विद द स्टैंडर्ड बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस एंड थिंग्स लाइक दैट? Yeah, so mainly I was enrolled in a coaching institute here in Kolkata. So I started with them. They started like teaching different units. But जब तक मैंने enroll किया था, it was almost August. So तब तक most of many topics were covered already. तो वो एक problem था. So I had to prepare those mostly on my own and through self study and YouTube videos and everything. And they used to make me solve PYQs also. From there I started and got interested in the subject. They like made me interested, so I'm really grateful to them. So then once I got the pace, I started reading from whichever source I could find. And YouTube is a very nice place. Like we get a lot of free resources, which was not present earlier. So it's like I consider ourselves very lucky that we got this. But yeah, but efforts are also very important. True. तो मतलब कोचिंग नोट्स पे ही मोस्टली आपने रिलाई किया है, और बाकी जो भी आपको लगा जहाँ स्टेट से बिट्स जहाँ से भी लगा जो भी टॉपिक यू. Yeah, and especially for revision, I relied a lot on YouTube and PYQs. वो तो मैं सॉल्व करती थी PYQ books. Great, Sreyashi. Any specific piece of advice you want to give to the future aspirants or students who are preparing for the June examination, that they should be doing? मतलब ये तो करना ही करना है. हाँ, so what I think is like the people who are sitting for the June examination, they should start by now, full-fledged.
they should start doing unit wise preparation कि आज मुझे like 2-3 दिन में मुझे ये units खत्म करना है. And if it's a revision units तो फिर तो 2 दिन में हो जाते हैं. If it's a new topic which I required a lot more time. थोड़ा plant physiology में मेरा बहुत time लग गया था because it takes a lot of time in plant physiology. बहुत कुछ new things था. And also you should be making notes for new topics and revising them the next day before you start like another topic. Revision is the most important thing because if you read a lot of things and then you cannot retain, it's like a very, very bad thing because you cannot remember, efforts wasted and everything. So instead of going for all the 13 units, you can target like 10-11 units, but like do it seriously and also not target very few units. So that's what I think. And also taking care of health and be motivated. Like having the correct, like the right people around you who can like motivate you. Like most of the families are very supportive. My family has been very supportive. But some people I have heard that their parents also start getting frustrated. कि तुम्हें तो नहीं मिल रहा है. But also like try to convey the positivity towards the parents also. And also choose friends wisely who will not like boast कि मुझे तो मिल गया है तुझे नहीं मिल रहा है. So this is not the kind of friends you should be talking to. So yeah, अब reels देखना थोड़ा कम करना पड़ेगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. मतलब आज की जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्ट्स और रील्स. एंड Yeah, and this was my problem also कि मुझे ना like I did not do it consciously. तो phone अगर हाथ में है, so I started going through reels and shorts. याद ही नहीं रहता है कि कितना time चला गया. And I was like, wow, इतना time कहाँ से चला गया? So what I did was like I did not like open reels or shorts for the entire day. रात को जब सोती थी तब I used to watch some of them and then I sleep. नाइस. हाँ ठीक है. मतलब थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए जस्ट स्पेसिफाई कर लो ना टाइम को, प्रायोरिटाइज कर लोगे तो आई थिंक हाँ, सब सॉर्टेड है. Great. So Shreyasi, we wish you all the best for your future endeavors. Thank you. First, and we are very happy to talk to you. मतलब बहुत insightful conversation रहा है. I am sure कि जो बच्चे इस conversation को सुनेंगे उनको बहुत help मिलेगी. उनके बहुत सारे doubts मैंने try किया है कि आपसे पूछूं उनके answers, क्योंकि I think जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, failure face कर रहे हैं, and then they are also again giving the examinations, they are the best people to give the judgments and the correct answers to the aspirants. So great insights, and we wish you all the best for your future. Take care. Thank you so much for talking to us. Thank you, ma'am. Take care. Okay, bache. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye bye.